Hello everyone, welcome back to our favorite channel, The Solam Tutor. ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟେଡ଼ ସ୍ପିଚ୍ର ଆକ୍ଟିଭିଟି 1ରୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ଦେଖିନେବେ କିମ୍ବା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିନେବେ। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟେଡ଼ ସ୍ପିଚ୍ର ବେସିକ୍ ରୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍କୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚାପ୍ଟରର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ଲେଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଇଜିଲି ପାଇଯିବେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟେଡ଼ ସ୍ପିଚ୍ର ଆକ୍ଟିଭିଟି 7, 8 ଆଣ୍ଡ 9 ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆକ୍ଟିଭିଟି 7ରୁ। ଏଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି Choose suitable adverbs from the list below and use them while reporting the following statement. The first one has been done for you. तो एठारे तले किछि एडवर्ब गुड़िकर लिस्ट दिया जाइछि एंड किछि स्टेटमेंट मध्य दिया जाइछि। तो आमे एडवर्ब गुड़िकर लिस्ट मध्यरु सुइटेबल एडवर्ब चूज करिबा एंड तले दिया जाइथिबा स्टेटमेंट गुड़ी को रिपोर्ट करने समय रे आमे ताको यूज करिबा। तो एठारे फर्स्ट सेंटेंस रो आंसरटा दिया जाइछि। तो एठारे एडवर्ब्स गुड़ी कहला passionately, accusingly, defiantly, passionately, agreeably, sarcastically, sharply, angrily. तो एठारे फर्स्ट सेंटेंस टी हला I shall always love you, the young boy said. तो यार आंसर टा दिया जाइछि The young boy passionately said that he would always love her. तो एठारे passionate adverb रो passionately adverb रो यूज होइछि आपण माने देखि पारुथबे। तो ठीक से हीपरि आमे नेक्स्ट सेंटेंस गुड़िकर आंसर मध्य लिखिबा। तो एठारे नेक्स्ट सेंटेंस टी हला I thought you said you were ill yesterday, she said. तो यह हिजबा she definitely said that she thought I said I was ill the previous day. Then third sentence टी हला you can go to the devil, the boy said. तो यह हिजबा the boy angrily said that I could go to the devil. Then achi I think we were having a wonderful party, he said. तो यह हिजबा he agreeably said that he thought they were having a wonderful party. Then achi you think you are gut, don't you, she said. तो यह हिजबा she sarcastically said that I thought whether I was gut or not. Then achi let's try again, shall we? It is rather difficult, the teacher said. तो यह हिजबा the teacher patiently said that it was rather difficult and they should try again. Then achi don't keep asking such silly question, the husband said. तो यह हिजबा the husband accusingly said not to keep asking such silly question. Then achi mind your own business, the stranger said. तो यह हिजबा the stranger sharply told me to mind my own business. तो एथिला एक्टिविटी 7 एठारे किभली भाबे एडवर्ब गुड़िकर यूज हला आपण माने जानि पाइथिबे। तो देन जिबा एक्टिविटी 8 को। एठारे क्वेश्चन रहिछि लास्ट संडे you met your cousin Harish, here are some of the things Harish said to you. तो लास्ट संडे रे तुमे तुम कजिन हरीश को भेटिला एंड से तुमको किछि विषय रे कहिला जहाँकि तले दिया जाइछि। एठारे 6टी सेंटेंस रहिछि आपण माने देखि पाउथबे एंड पुणी रहिछि एठारे you want to tell your mother the same day what Harish said to you, use reported speech. तो एठारे क्वेश्चन रहिछि तुमे ठीक से ही दिन सेम डे रे
हरीश तुमको जहाँ कहिला से सबू तुमे तुम माँ को कहवाक चाहूच। तो एठारे हरीश रो सबू स्टेटमेंट को आमे रिपोर्टेड स्पीच यूज करी लेखिबा। तो आमे पूर्वर रूल जानिछे जे आमे जदि गोटे रिपोर्ट को एट द सेम टाइम ऑफ रिपोर्टिंग और एट द सेम डे रे जदि रिपोर्ट करूछे तो एहार रिपोर्टेड स्पीच मध्यरे थिबा सेंटेंस रो कोनोसी टेंस रे परिवर्तन हेबो नाही। तो यह ठीक सही परी सही रूलटा एप्लाय हेबो एठारे। तो एठारे फर्स्ट सेंटेंस टी अछि आई वुड लाइक टू गो टू ए कॉलेज good college but my parents can't afford the fees। तो यार आंसर है Harish said to me that he would like to go to a college but his parents can't afford the fees। ठीक से परी नेक्स्ट सेंटेंस देखिबा I am living with a friend now and working part time। तो यह है he said that he is living with a friend now and working part time। देन अच्छी आई एम एन्जॉइंग माय वर्क। तो एठारे आपण मैंने देखि पारुथिबे किछि हिंट दियाछि एंड ठीक से बोली आमे तार आंसर करूचे। तो यह है ही आल्सो सेड दैट ही इज एन्जॉइंग हिज वर्क। देन फोर्थ सेंटेंस टी हला माय बाइसाइकिल वाज स्टोलन ए फ्यू डेज एगो। तो यार आंसर है ही सेड दैट हिज बाइसाइकिल वाज स्टोलन ए फ्यू डेज एगो और यह है हैड बीन स्टोलन ए फ्यू डेज before। Then अच्छी my friends has got a scholarship to study abroad। तो यह है he said that his friend has got a scholarship to study abroad। Then last अच्छी I will tell my mother that I met you। तो यह है he said that he will or would tell his mother that he met me। Then एक्टिविटी 9 देखिबा एठारे क्वेश्चन रही इमेजिन दैट यू आर ए जर्नलिस्ट एंड दैट यू हैव टू रिपोर्ट ए स्कूल डिबेट। द टॉपिक फॉर द डिबेट वाज चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू वॉच टेलीविजन। सम स्पीकर्स सपोर्टेड द टॉपिक व्हाइल अदर्स अपोज्ड इट। द मेन आर्ग्युमेंट्स आर समराइज्ड बिलो। तो एठारे क्वेश्चन रही इमेजिन कर जे तुम गोटे जर्नलिस्ट एंड गोटे स्कूल डिबेट को रिपोर्ट करने को हेब। तो डिबेट रो एठारे टॉपिक थिला चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू वॉच टेलीविजन। तो किछि स्पीकर यहाँ को सपोर्ट कले एंड किछि अपोज कले। तो तले किछि मेन आर्ग्युमेंट को समराइज करा जाइछि आपण माने देखि पाउतबे। एठारे टॉपिक देछि चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू वॉच टेलीविजन। एठारे फॉर रे स्पीकर मान जहाँ सपोर्ट कले से स्टेटमेंट गुड़ा को दिया जाइछि एंड अगेंस्ट रे जहाँ अपोज कले से स्टेटमेंट गुड़ा को दिया जाइछि। जेमिति एठारे टेलीविजन स्टिमुलेट्स थिंकिंग। तो एठारे किछि स्पीकर यहाँ को अगेंस्ट करी कहिथिले जे इट किल्स द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक से हीपरी नेक्स्ट सेंटेंस गुड़ा को से माने सपोर्ट एंड अपोज रे कहिथिले। तो एठारे पुणी रही बिगिन एज फॉलो। तो एठारे आमे एपरी भाबे एही सेंटेंस गुड़ा को स्टार्ट करिबा जेमिति एठारे देइछि सम स्पीकर सेड दैट। तो एठारे फर्स्ट सेंटेंस टी रहिबा सपोर्ट जहाँ करिथिले। तो एहा हिजबा सम स्पीकर सेड दैट द टेलीविजन स्टिमुलेट्स thinking but some other speakers were of the opinion that it killed the art of conversation। ठीक सही परी सेकंड सेंटेंस को लेखिबा। तो यह हिजबा some speakers said that it keeps the family together but some other speakers were of the opinion that it ruined the family interaction। Then next sentence को लिखिबा some speakers said that it keeps one well informed but some other speakers were of the opinion that it made people uncritical। Then अच्छी next sentence तो यहाँ को हमें लिखिबा some speakers said that it brings the outside world into the home but some others were of the opinion that it shut out the real world। Then next sentence को लिखिबा some speakers said that it provides a lot of information but some others
were of the opinion that it ruined the reading habit. And last sentence को लिखिबा some speakers said that it is a good babysitter, but some others were of the opinion that it made the children passive. तो ये थिला डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच एक्टिविटी 7, 8 एंड 9 क्वेश्चन आंसर। तो वीडियोटी जदि आपण मानक भल लगी तो प्लीज लाइक करने को भूलु ना एंड फ्रेंड्स मानक सह निश्चित भाव शेयर करूँ एंड आई विल बी कमिंग विथ द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। सो टिल दैट कीप वाचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।